When you get into the real world, you meet different kind of people with different perception. If you Right. can collaborate with them as a team, then I think you can excel in any field. क्रिएट योर ओन पाथ. हो सकता है आज स्पोर्ट्स हम वैल्यू करते हैं, इट्स बिकॉज सम पर्सन stood up and said sports is important, let's make a world cup out of it. You should have a clear understanding within yourself what you want to do. Please do not get influenced by your peer, do not get pressurized by your parents, because every individual has her or own journey in life. दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ऑन द टॉपिक गुड करियर ऑप्शंस फॉर एवरेज स्टूडेंट्स. इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एजुकेशनल एक्सपर्ट. वी वुड लव टू वेलकम मैम मीनल बख्शी. हेलो एंड वेलकम ऑन FM 107. होप यू आर डूइंग Thank you, गुड. Ms. Nazia. And I'm very glad to be part of QMC FM 107, Dil Se Desi. और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हार्दिक. तो हार्दिक, आप कैसे हैं? Hello ma'am, I'm really good, thank you. It's a really big pleasure to be here and I'm really happy that I'm able to accompany my principal over here and helping people identify what path they should choose. फैंटास्टिक. शुरुआत करते हैं आपसे ही. ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए कौन से करियर पाथ्स जो हैं वो बेस्ट हैं, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स किन करियर पाथ्स को जो है वो यूजुअली दे ओवरलुक? ओके नाजिया, जैसा आपने खुद ही मेंशन किया है कि जो एक्सेप्शनली गुड स्टूडेंट्स होते हैं उनका करियर पाथ हमेशा से बहुत क्लियर होता है. दे नो व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू डू एंड दे प्रिपेयर देमसेल्फ अकॉर्डिंगली. जहाँ बात एवरेज स्टूडेंट्स की आती है, मेजॉरिटी स्कूल में एवरेज स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं एंड एक्सेप्शनली वेल स्टूडेंट्स हैंडफुल होते हैं. सो जब हम एवरेज स्टूडेंट्स की बात करते हैं, सो देयर आर 3 ways टू लुक इनटू इट. पहला होता है पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव, जहाँ पेरेंट्स बच्चों को इनकरेज करते हैं अपने यू हैव टू गो टू इन दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन. और जैसे कि आप जानते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच है मेडिसिन, इंजीनियरिंग विच आर वेरी पॉपुलर एंड हमारे टाइम पे भी हमारे पेरेंट्स ने यही 2 करियर पाथ हमें बताया. बट इन टुडेज सिनेरियो इफ यू सी देयर आर सो मैनी invaluable careers options available for students nowadays which are usually ignored due to ignorance, and sometimes we feel that we do not get that kind of reputation, or there is an image building linked with the profession. See, suppose a student is very good in sports but little bit lacking in academics. There is a very good career option for a student to go for sports management courses. Right. There are children, those who are not going ahead with science stream, they are usually going for humanities or commerce. There is a digital marketing which is a very upcoming profession where you have a lot of things to explore and a lot of creativity can be showcased by the students. So it's all depends how schools, parents both are encouraging and opening different career pathways to students which are usually ignored by average students. And for that, not highly skilled students are required. They can easily work on their soft skills and side by side hard skills, and they can really have a dream career with Wow. these options. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल. नाउ कमिंग टू हार्दिक. पहले तो बताइए हार्दिक, आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हैं? मैम मैं अपने आप को मानता हूँ इन द कैटेगरी ऑफ मे बी जस्ट अबव एवरेज येट जस्ट बिलो एक्स्ट्रॉर्डनरी. आई फील लाइक किसी स्टूडेंट में इतना ज़्यादा कोई भेदभाव नहीं होता. वी आर ऑल एक्चुअली सेम. इट्स नॉट लाइक वन इज़ फिजिकली डिसेबल्ड और एनीथिंग लाइक दैट. इट्स जस्ट कि किनको क्लैरिटी है what they want to do and how they want to do it, and the support system that they have gotten. So I believe I have gotten a really good support system courtesy of Meenal ma'am and the entire school, and I feel like that's why मैं excel कर पा रहा हूँ in everything that I'm trying to participate in. Are you clear with your goals and objectives? क्या करना है लाइफ में? Yes ma'am, actually मेरे हिसाब से आई ऑलवेज हैड दिस ड्राइव कि मुझे इनोवेट करना है. आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन कंपनी एंड आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर अ पर्पस. आई वॉन्ट टू सॉल्व पीपल्स प्रॉब्लम्स नॉट फॉर माई सेल्फ बट फॉर एक्चुअली मेकिंग एन इम्पैक्ट. तो इसलिए मैंने चूज़ किया कि आई वुड बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड आई एम ट्राइंग एवरी डे टू समहाउ पार्टिसिपेट इन दोज स्किल्स एंड लुक फॉरवर्ड टू ऑल द बेस्ट कोर्सेज जो आ रहे हैं विद द नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर्स. एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो किस तरह से अपनी यूनिक स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करे इन ऑर्डर टू परस्यू अ गुड करियर ऑप्शंस? सी नाजिया, जहाँ बात आती है स्टूडेंट्स की स्किल्स और उनके इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करने की, सो सबसे पहले स्टूडेंट्स को खुद इंट्रोस्पेक्ट करना है व्हाट दे लाइक टू डू. जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए किसी एक सब्जेक्ट का जो उनको बहुत पसंद है पढ़ना, सो वो उसी फील्ड में अपना करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं रिगार्डलेस थिंकिंग वेदर इट इज एक्सेप्टेड इन सोसाइटी, वेदर इट वुड बी glorified profession or not. Right. See, as a educationist, I believe
it doesn't matter what you do, it's always matter how do you do. So आप जो भी करियर पाथ लेते हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट है, वो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री. और इन टुडेज सिनेरियो इफ यू सी देयर आर thousands of career options available not only in India, in many countries outside India, especially in Qatar. If you see it's coming up in a big way, a lot of universities which are coming up, which are giving a lot of different kind of career options for children, not really traditional careers like medicine or engineering. So I think students should introspect what subject they like, and there is a role of a school also in that to identify that how the best can be brought out of that child. Not always taking a traditional approach that every child should get above 90% marks and we can flaunt our school result. That should not be the approach of a school or a true academician. So this is the way we can identify what is exactly the strength of that child, and using that same strength the child can opt for the career option. Perfect. Very well said. Okay, tell me, what role do internship and basically, the voluntary experience play in helping students to enhance their employability? Yeah, it's a very, very important question you asked, and which is very close to my heart as well. We have initiated one program which is called Mentoring Young Minds, where we have 3 components: community service, internship, and career counseling. So why we have added these 3 components? जिससे कि बच्चों को तीनों एरियाज में एक एक्सपोजर मिले. कम्युनिटी सर्विस, व्हेन वी से, दे शुड हैव दिस काइंड ऑफ सेंस ऑफ गिविंग बैक टू देयर सोसाइटीज. लाइक जैसे अभी हार्दिक ने मेंशन किया, ही वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर बट विद अ पर्पस. ही वांट्स टू गिव बैक टू सोसाइटी इन अ वे, right? And he is choosing that career option. Second is internship. So when you go for any kind of internship, basically you get to see the practical aspect of that career. Now the one aspect of learning is studying theoretical part in the 4 walls of a classroom, and when you step out in the real world, then you see what are the practicality of that particular profession. So आप जब किसी internship join करते हैं, जब आप उस work place पे जाते हैं, and then you start working, then you see the practical side of that field. That is the approach should be followed whenever you want to choose any career option. अगर आपको उसकी internship मिलती है, every student must go and see and have the taste of that particular profession, that what kind of skills are required, how I'm gonna manage in day-to-day operations of that particular job, what are the expectation as an employee. Right now I'm in a school, a very protective environment with my parents and teachers. When I go for internship, I have to deal with different kind of people. Right. Apart from the work, there are a lot of other skills like collaboration, teamwork, a lot of things you need to do and learn. And I think internship gives you that opportunity to learn that. Can you tell me what were those moments that actually help you to set your goals, your objectives in life? मैम तो बेसिकली इट ऑल स्टार्टेड अराउंड 9th grade में व्हेन मैं बस एक नॉर्मल आई थिंक स्कॉलर था. आई जस्ट लाइक टू गेट मोर ग्रेड्स एंड ग्रेड्स. पर फिर एक लाइक एम्प्टीनेस थी दैट इट डजंट फील लाइक आई एम एक्चुअली डूइंग समथिंग फुल पर्पस. मतलब ये कब तक चलेगा आफ्टर स्कूल? तो देयर इज नो मोर ग्रेड्स एनी मोर. इट्स ओनली द वर्ल्ड. वी डोंट नो हु टू ट्रस्ट, कैसे चीज़ें चलेंगी, एंड रियलिटी इज नॉट सो फेयर. So then I decided to introspect, like ma'am said, कि what all exists and what fits for me. So then I reflected on my childhood, seeing कि मेरे habits क्या थी, मेरी patterns क्या थी, how would I often find ways through problems. Then I noticed मेरे को बहुत शौक था of a lot of making businesses, trying to pretend to be a businessman. But then at the same time मुझे tech का बहुत curiosity था, how ये चलता कैसे. For some reason ऐसा लगता है जैसे कोई magical bond है हम दोनों के बीच में. तो I just went for that and I decided कि कोई ना एक app launch करके देख लेते हैं. And then as I went on that, it just started to become into experience and I realized that yes, this is something जो मुझे करना है, and even if I fail, it's better. I'll get more into it, but I want to definitely do something in this. What skills are most in demand considering today's job market? See, of course, as a principal, I would say children have to study, they have to get good grades, but those are hard skills, right? Right now also, when I'm talking to you, Hardik is talking to you, don't know how much he scored in grade 10. It's how you present yourself. And the way you present yourself, that is the difference you make in the world. So, iske liye, there are few skills which are really very important in 21st century, which is collaboration, according to me. You should know how to collaborate with people, and you should know how to work in a team. Because this is very important. When you get into the real world, you meet different kind of people with different perception. If you can collaborate with them as a team, then I think
you can excel in any field. Hard knowledge, hard skill is one aspect, but these are the soft skills which will help you to grow in your profession. So according to me, teamwork, collaboration, and another one is communication is really very important. Hardik, who is your role model? It's a funny question because this thing keeps changing. But I think today, if one constant role model that I really admire is Elon Musk. But I have a trajectory to it that is ki I don't admire the fact about the startups or anything he has made. It's just simply an ability of someone ki क्यों आपको इतना देना है दुनिया को. That struggle, I feel like that is real courage. That is a lot to give out. Further in history, I really admire Rana Pratap Singh and all our freedom fighters. Finally, in 12th grade, I understand Mahatma Gandhi kyun the, how they were, and how diplomatically he handled every situation and brought us independence. So I feel like I really look up to them. अच्छा मीनल, you tell me project based learning और team work को आप किस तरह से देखते हैं? See, project-based learning is really very important, and this is what I said. It helps for collaboration also. वो skills Definitely, भी? because आप एक normal classroom scenario लीजिए जिसमें there are 5 students and they have to do one project together. Again, they have to communicate with each other in a very clear way. They have to collaborate. They have to do a lot of teamwork. They have to divide the work as per their strength and weaknesses. So it's not about at what level of project you are doing. Even if you are doing a very small project, still these skills are integrated with that project-based learning. And that's the whole purpose of integrating project-based learning into curriculum, so children learn these soft skills. True. Right. And in which collaboration is most important, because even if you are a team leader or you are a member of that team, how you talk to each other, how you decide who will do what, how you as a team decide who will present what, this is all called collaboration, and that generates a trust factor amongst the team members. So that's why project-based learning is very important and very crucial, and it goes a long way to develop these soft skills among the students. 12th grade के बाद बेसिकली कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से कोर्सेज जो हैं आपको लगते हैं कि वो अच्छे हैं? Nowadays, there are plenty of options available for children, those who want to do something in the field of humanities. There are a lot of colleges, universities which have come up with a lot of courses with mass communication, digital marketing, and there's a big scope of history, which is ignored subject. So yeah. if you see, the people are, many students I have taught, they are going into this field and they are doing really very well. So history is always linked with that. It's a theoretical subject where how can you make a career when you study only about past, but then if you know your past well, then you can make your future and your present well. Definitely. And we say history repeats. So there are so many universities, those who are offering different kind of courses in the field of humanities, and philosophy is another upcoming subject. Psychology is a very upcoming subject. Now I've seen in our school even science stream students, they are taking psychology as a subject with science stream, because somewhere they feel that even if they go for any technical line, humanity touch has to be there, right? And for commerce, again, there are plenty of career options are available. Traditional career paths are BBA, MBA, but now there are a lot of courses are coming to do well in entrepreneurship, and there are a lot of courses coming in international business, where it's little different from traditional courses. Like we always used to think, if you are a commerce student, maybe you want to become a chartered accountant only initially. But now there are a lot of career paths available, because in commerce stream also there are various fields like production, human resource, marketing, office management. There are so many fields. You can, specialize and choose a career path. And there are many universities in India and abroad, those who are offering very unique courses. Hardik, would you like to ask something? Ma'am, I think every school mein average people or average students are always have like let themselves down. They don't want to come out further anymore. So ma'am, I think what would your advice be to them ki there is still more to them and they are also as equally capable as all the other types? See, this is a How very to motivate them? Yes, this is a very sensitive question actually. Usually schools में होता है, and I accept up to a certain extent. बच्चे जो बहुत अच्छा करते हैं, टीचर्स के वो फेवरेट होते हैं, टीचर्स उन्हें बार बार सेलेक्ट करते हैं सेम चीज़ के लिए. बट यहाँ पे टीचर का बहुत मेजर रोल होता है टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द पोटेंशियल इन ईच चाइल्ड. सो अगर आप एज अ टीचर वो पोटेंशियल आइडेंटिफाई करना शुरू कर दोगे एवरेज स्टूडेंट्स के, सो आई थिंक दे विल नॉट फील दैट दे आर लेफ्ट ओवर. So that's the main thing, and that's the main role of a school and teacher
so that identify what is the strength of this child and accordingly try to create opportunities for those children. It could be sports, it could be any cultural program, it could be in the field of math, science, humanities, anything. अच्छा, हमने एवरेज स्टूडेंट्स की बात की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिलो एवरेज स्टूडेंट्स. क्या उनके लिए भी कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं जो स्कूल रन करता है? डेफिनेटली नाजिया, सी हमारे स्कूल में बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, मिनिमम लर्निंग प्लान, जिसमें हमारा फोकस 100% नहीं होता है. वी सेलेक्ट सर्टन टॉपिक, सर्टन एरियाज वेयर वी फील चाइल्ड कैन रियली डू वेल. सो एटलीस्ट बच्चे को मोटिवेशन मिलता है. आउट ऑफ 18 टॉपिक्स एटलीस्ट आई एम एबल टू डू 8 टॉपिक्स रियली वेरी वेल, और उनको बर्डन भी फील नहीं होता है. एंड इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट गेटिंग मार्क्स एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. सो बट अगेन this will increase your confidence that from my syllabus at least I know 40%. At least I can pass this class. So slowly and gradually you build that confidence amongst the students. And I have seen a huge difference where children were struggling. They have to study so much because of parents' expectation, because of teachers' expectation. But when they come for this minimum learning plan program, what I feel, they really feel confident after some time because they know we can really do very well in these topics. So that's how we build up the confidence. But it's a long process. We can't see the results in overnight. Thank you so much, ma'am, and thank you, Hardik, for taking out this time and talking to us. It was such a insightful session. जाते जाते मैं चाहूँगी कि आपका मैसेज हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए और लिसनर्स के लिए FM 107 के क्या देना चाहेंगे? मेरा हमेशा I would still say I'm a teacher at heart. मेरा एक ही मैसेज स्टूडेंट्स के लिए होता है. एंड आई ऑलवेज सी, आप कोई भी करियर पाथ चुने, कुछ भी लाइफ में आप ऑब्जेक्टिव या टारगेट रखें, ऑलवेज ट्राई टू गिव योर बेस्ट. सी इफ़ यू एक्सेल द सक्सेस विल कम टू यू डेफिनेटली. आप हमेशा से ये नहीं रखो कि हमें सक्सेसफुल बनना है. इट्स अ लॉन्ग जर्नी एंड नाउ इन दिस टुडेज वर्ल्ड वेयर टेक्नोलॉजी हैज़ टेकन ओवर एवरीवेयर, आई से दैट यू शुड हैव अ clear understanding within yourself what you want to do. Please do not get influenced by your peer, do not get pressurized by your parents, because every individual has her or own journey in life. So try to identify what you want to do in life and then the people will follow you for that. बहुत खूबसूरत मैसेज, बहुत ज़बरदस्त. थैंक यू हार्दिक. वुड यू लाइक टू से समथिंग? आई थिंक मैं बस 3 चीज़ें बोलूँगा टू ऑल माई पीयर्स जो सुन रहे हैं. पहला, इंट्रोस्पेक्ट करो. ट्राई टू आस्क योर सेल्फ मोर क्वेश्चन रादर देन ऑलवेज बीइंग प्रेजेंट विद अदर पीपल, क्योंकि ऑथेंटिसिटी आपको सबसे ज़्यादा समझाएगी हु यू रियली आर एंड आप क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो. एंड सेकेंड थिंग इज़, दिल सी देसी रहो. डोंट बी ऑलवेज सो सीरियस और स्ट्रेस्ड अबाउट जो भी आपके सामने आ रहा है. हर चीज़ का सोल्यूशन उसके प्रॉब्लम के साथ ही आ जाता है. सो इंट्रोस्पेक्ट, फाइंड, लुक, डिग, एक्सप्लोर. बहुत सारे ऑप्शंस है और आज तो टेक्नोलॉजी से वी कैन एक्सेस एनी मेंटर. जस्ट स्लाइड इनटू द डीएम्स ऑफ एनी पर्सन जो आप एडमायर करते हो. क्या पता किस्मत से ही माइट रिप्लाई. सो ट्राई दैट. एंड थर्ड थिंग इज फोकस ऑन व्हाट्स इम्पॉर्टेंट. फोकस ऑन जो आपको एक पर्पस देता है, नॉट गेटिंग इनटू द क्राउड रश की दे आर डूइंग दिस, आई शुड ऑल्सो बी डूइंग दिस, या दिस इज इम्पॉर्टेंट. क्रिएट योर ओन पाथ. हो सकता है आज स्पोर्ट्स हम वैल्यू करते हैं, इट्स बिकॉज सम पर्सन stood up and said sports is important, let's make a World Cup out of it. वेरी वेल सेड, फैंटास्टिक. वेल दोस्तों, आज का बहुत ही कमाल का सेशन रहा और जाते जाते जो मुझे समझ में आया कि खुद पर यकीन रखिए, अपने टैलेंट पर यकीन रखिए और किसी के भी दबाव में ना आइए. जब ये सारी चीज़ें आपके साथ चलेंगी, खुद को आप हाईली मोटिवेट करते रहोगे तो कामयाबी डेफिनेटली आपके कदम चूमेगी. वेल, इसी पॉजिटिव नोट के साथ अब वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का. नए एपिसोड में नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.